Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in plant breeding. Starting with the first one, that is resistant breeding biotype. The biotype of an insect pest which has developed the ability or adaptation to infest a resistant variety of the host. मतलब resistant variety है लेकिन उसमें भी infection करने की ability. Next one is restorer gene, a gene usually dominant that effectively overcomes the effect of male sterile cytoplasm on male fertility. That is, enables the production of functional male gametes even in the presence of male sterile cytoplasm. अब जब हम लोग मेल स्टाइल प्लांट क्रिएट करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है रीस्टोर करने के लिए. सो दिस रीस्टोर जीन्स हेल्प्स इन दैट. Next is restriction enzyme, an endonuclease which cuts a DNA molecule within or near a site having a specific nucleotide sequence. Used in restriction mapping, RFLP analysis, recombinant DNA technology, genetic engineering, etc. Basically, simple words में बोला जाए तो these are the scissors. Next one is reverse breeding. Isolation of complementing inbreed of an heterozygous or hybrid plant or genotype by suppressing crossing over during meiosis, followed by isolation of haploid plants by anther or ovary culture, and then production of double haploids from these haploids. Reverse breeding कर रहे हैं मतलब कि हम लोग उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं. ब्रीडिंग क्या होता है वी ऑल नो. उसी तरह इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं रिवर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं. हम लोग हैप्लॉइड से फिर डबल हैप्लॉइड्स बनाते हैं, किसी तरीके से हैप्लॉइड्स बना लेते हैं एंथ्र या ओवरी कल्चर से, एंड देन वी गेट आवर डबल हैप्लॉइड प्लांट्स. नेक्स्ट इज रोगिंग. रोगिंग क्या होता है कि जो भी अलग तरीके का प्लांट फील्ड में दिख रहा है ऑफ टाइप्स का, उसको हटाना. रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज. S1, S2, S3, etc. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन डिराइव फ्रॉम सेल्फिंग. जब हम लोग सेल्फिंग करते हैं उसको S0 बोलते हैं या फिर S0 बोलते हैं रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में. फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आता है उसको S1 बोलेंगे एंड द लाइक. Saline soil. Soil containing enough neutral soluble salt so that their saturation soil paste extract has electrical conductivity of more than 4 ds per meter. Then the last one is salinity threshold. वो मैक्सिमम सैलिनिटी लेवल जिसमें कि yield loss नहीं होगा. The maximum salinity level at which there is no yield loss. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.